Discuss pharmacokinetics, right? So pharmacokinetics is one of the important uh, topics for drug discovery and drug designing. Although this topics looks like this is a part of pharmacy, but this title have immense application in drug discovery process as well, because when we are discovering or designing some drug molecule, then we must consider pharmacokinetics and dynamics parameters, and different approaches are involved in drug discovery that predict or understand the pharmacokinetics and pharmacodynamics of any molecules, right? So I hope my screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. So pharmacokinetics, the intensity of the drug effect and the duration of the drug action are controlled by four fundamental pathways of drug movement and modification in the body. So drug at the site of administration, that is absorption, drug in plasma, drug in tissue, and finally the elimination or excretion, right? So these are the four stages of drug what we take inside our body, and kinetics deals with the movement of molecules across your body system and the movement and behavior of system. So first, drug absorption from the site of administration. Site of administration, we will see in our later slide that what are the site of administrations. So second is the drug may be, you know, dissolved in plasma or other intracellular fluids. Third is metabolism. So metabolism may be in the liver, kidney, or other tissues, right? And the last one is elimination. Elimination is basically through urine, bile, feces, and somewhere by means of sweating as well. There is a very less chance of elimination of drugs through sweating, but still, negligible amount of excretion of any external molecules might be possible through sweating. Sweating means pasina, right? So first step of drug is route of administrations. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स हम ड्रग्स को किसी भी बॉडी सिस्टम में, किसी भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग के बॉडी सिस्टम में कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे पास करेंगे. So, and this is very important parameter for drug discovery, that the route of administration is a critical point to be considered when we are designing a drug. I mean, that depends on many things. Suppose some molecule is, you know, less stable, then we usually choose to administrate that. I mean, at the site of, action, जहाँ उसे वर्क करना है वहां पे हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं. फिर जो सॉलिबिलिटी है उस पर भी डिपेंड करता है. रिलीज जो है, कितना स्लो रिलीज आप चाह रहे हैं, फास्ट रिलीज चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वी डिसाइड द रूट ऑफ ड्रग. So route of drug administration decided by nature of molecules you wish to use as a drug, and the need of molecules. आपको immediate effect चाहिए, slow effect चाहिए, consistent चाहिए, इसके according we decide this administration route, right? So by properties of drug and by the therapeutic objectives, ना? ये दो points हैं.
द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ROA भी बोलते हैं, दैट इज चूजन may have a profound effect upon the speed and efficiency with which the drug act, right? So effect of any drug molecule means how efficiently any drug molecule will work is more or less dependent on route of administration as well. Okay? We have seen many times that when we need quick action, then sometimes we choose intravenous. Veins में नस में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन के थ्रू हम शूट करते हैं. एंड समटाइम आई मीन बाइलिंगुअल मीन्स आप जीप के ऊपर रख करके भी एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक रूट है, आगे हम लोग देखेंगे. जैसे किसी किसी हाई बीपी या वैसे केस में बीपी को लो डाउन करने के लिए, अगर पेशेंट होश में है ना, वो बातचीत कर रहा है और समझ रहा है, तो लिंगुअल भी हम लोग देते हैं, जीप पे भी रख कर देते हैं. सो आई मीन दीज आर द कंडीशन बेस्ड एज वेल. The main route of drug administrations are shown in here, this image as well. It- Intral, that is oral, sublingual, and rectal, right? Rectal drug administration is very limited, and parenteral, intravascular, intravenous, intramuscular, and subcutaneous. Subcutaneous means एक तो मसल्स में हम देते हैं, सबक्यूटेनियस जो है जस्ट हम स्किन के अपर पार्ट्स में इंजेक्ट करते हैं. अदर्स आर मे बी इनहेलेशन. इनहेलर हम लोग यूज करते हैं ऐसे मौसम, जो अभी मौसम चेंजिंग है, एलर्जिक मौसम जो है, उसमें हम लोग इनहेलर का यूज करते हैं. खासकर जो पेडियाट्रिक है, छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न वगैरह को जो देखते हैं, वो इनहेलर्स यूज करते हैं. कोविड में हमने काफी सारा इनहेलेशन एंड उसके यूज किए. इंट्रानेजल, है ना, इंट्रा एथिकल इन CSF, है ना, सेंट्रल रूट्स में, and topical transdermal. These are the routes commonly used for drug administrations, right? So again, this slide show you different point of administrations, different route of administration, absorption and distributions, and finally the elimination part, right? So oral drugs usually be oral and rectal. Usually we keep it through guts, right? And its absorptions and distributions occurs in portal system, and then elimination, metabolism start in liver, and it may be excreted through kidney, and if it is in plasma, then it is goes through breastfeeding, sweat gland, etc., milk and sweat. So see, we can see here that many of the drugs administered to um, the women can be goes through the milk as well. So and sweat as well, right? Other is precutaneous. More or less, the excretion route is urine, feces, milk, sweat, and expired air. इनहेलेशन के जो कुछ हैं, वो जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, उससे भी एक्सक्रीट होता है, निकलता है. ठीक है. इंट्रामस्कुलर्स, इंट्रावेनस. Internal routes are drug placed directly in the GI tract, maybe oral through swallowing. हम लोग जो निगलते हैं किसी टैबलेट्स को. Sublingual, placed under the tongue, right? Rectum, absorption through the rectum. Oral, giving a drug by mouth, is the most common route of administration, but it is also the most variable and require the most complicated pathway to the tissues. Little absorptions occur until the drug enters the small intestine, right?
सो मोस्ट कॉमन इज द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके जो प्रोस एंड कॉन्स है वो यहाँ बताया है कि एब्जॉर्प्शंस थोड़ा स्लो है, बट एट द सेम टाइम इसके साइड इफेक्ट थोड़े कम होंगे, क्योंकि एकदम से हाई क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है, तो उससे भी थोड़ा वो है। एंड इजी है, इसमें कोई साइड इफेक्ट के कम चांसेस हैं। और इवन जो आई मीन अनट्रेन्ड पर्सन है, जैसे फॉर हम लोग बात करें इंजेक्शन की बात करें, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो उसके लिए ट्रेन मैन पावर की जरूरत है, नर्सेज हैं, हॉस्पिटल स्टाफ है, उनकी जरूरत है। बट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी कॉमन मैन भी ले सकता है ड्रग्स। तो ये कुछ इसके फायदे हैं और नुकसान भी हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, द ड्रग absorbed by passive transport mechanism, the intestine, at the rate determined by the ionization and lipid solubility of the drug molecules. Strong bases of pKa10 are higher or poorly absorbed, as are strong acid pKa less than 3 because they are fully ionized. ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट लाइन में कि जो नेचर ऑफ कंपाउंड है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उस पे भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। सो ये भी एक पैरामीटर्स हैं कि आप इसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना चाह रहे हैं ड्रग्स। अगर कोई इन क्राइटेरिया लास्ट लाइन जैसे पीके जिसका 10 या हायर है, तो वैसे ड्रग्स को अगर आप ओरल रूट से दे रहे हैं तो उसकी इफेक्ट कम होगी। सो व्हेन यू डिस्कवरिंग सम ड्रग, डिजाइनिंग सम ड्रग, देन यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक है। दीज आर द absorption of drug from the intestine as a function of pK or acids and base। ये एक स्कीमेटिक आई मीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया। ठीक है। There are few instances where intestinal absorption depends on carrier-mediated transport mechanism rather than simple lipid diffusion. For example, levodopa, iron, calcium. So these are few molecules जो कैरियर मेडिएटेड होते हैं। तो इनका ये एक्सेप्शंस हैं, उसमें एडवांटेज है, कन्वीनियंट है, एब्जॉर्प्शंस जो है टेक प्लेस अलोंग द होल लेंथ ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, चीप है, सस्ता है। ओरल ड्रग्स कोई भी जो है वो कंपेरेटिवली सस्ता होगा, राइट। इंट्रावेनस के लिए आपको निडल्स चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, ट्रेन मैन पावर चाहिए, तो वो थोड़ा कॉस्टली होगा। लेकिन इफेक्ट डिसएडवांटेज अगर हम लोग बात करें तो अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ सम ड्रग्स, स्पेशली पीडियाट्रिक ड्रग के लिए तो काफी मुश्किल है, अनप्लेजेंट टेस्ट है, बच्चे नहीं लेते हैं इसको। इरिटेशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा, समटाइम आपको नौसिया, वॉमिटिंग ऐसी फीलिंग आता है जब आप ओरल एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग बाय गैस्ट्रिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस एक चैलेंज है कि जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आपके ड्रग्स को डिग्रेड होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। समटाइम इनएफिशिएंट, ओनली पार्ट ऑफ ड्रग में बी एब्जॉर्ब, नहीं बाकी वेस्ट हो जाता है, तो ये भी एक पार्ट बात है। इफेक्ट टू स्लो फॉर इमरजेंसीज, अगर इमरजेंसी है आपको तो वैसे केस में ओरल ड्रग बहुत इफेक्टिव नहीं है। फर्स्ट पास इफेक्ट, so drug absorbed orally are initially transported to the liver via portal vein, unable to use in unconscious persons or who have GI surgery, right? Most of the drug is absorbed in a small intestine. Okay? So small intestine has much larger surface area for absorptions. As we all know that the largest part of GI tract is small intestine, ये coiled form में होता है। And drugs spend more time in a small intestine, more than 4 hours, than stomach. स्टोमक में ज्यादातर हाफ एन आवर टू 1 आवर तक ही होता है, सो ज्यादातर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ही होता है। और ये एक एज भी है, ये आई मीन बेनिफिट भी है, क्योंकि ज्यादातर जो एसिड्स हैं वो स्टमक में ही है, इंटेस्टाइन में नहीं है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो सकता है, तो डिग्रेडेशन के चांस जो भी है वो फर्स्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर तक ही है ज्यादा।
फूड इन द स्टोमक कैन डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, ये भी पार्ट बिल्कुल सही है कि कोई ओवर ईटिंग कर रखा है, वैसे केस में एब्जॉर्प्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि वो तो डाइजेशन के साथ वो पीसेज में निकल जाएगा। तो ये चैलेंजेस हैं आपके ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के। एक और चांसेस हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड फूड पार्टिकल्स, नहीं, समटाइम हम डॉक्टर पास भी जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें गाइड करते हैं इसके साथ ये नहीं खाना, इस ड्रग के साथ ये नहीं खाना। So these are the maybe probability of reactions between drugs and food particles. Now, first pass effect. अभी मैं एक टर्म यूज किया था, first pass effect. So when a drug absorb across the GI tract, it enters the portal circulation before entering in the systematic circulation. The drug can be metabolized in gut wall or even in portal blood. But most commonly it is the liver that is responsible for metabolism before the drug reaches the systematic circulation, that is plasma. In addition, the liver can excrete the drug into the bile. Any of these sites can contribute to the reduction in bioavailability, and overall process is known as first pass effect. आप लोगों ने बॉडी सिस्टम पढ़ा होगा, तो उसमें हेपेटिक वेन जो है वो एब्डोमिनल रीजन से ब्लड को डायरेक्ट लीवर में ट्रांसफर करता है। तो अगर आपका ड्रग जो है वो हेपेटिक सिस्टम में चला गया, नहीं, पोर्टल सर्कुलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें अगर चला गया तो वो डायरेक्ट लीवर में जाके डिग्रेड हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा, और वहां से वो मे बी यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा, बाद में ब्लड के थ्रू वो बाइल में कन्वर्ट होकर मतलब एक्सक्रीट हो जाएगा, वहां से मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो उसका उसका भी आपको देखना पड़ेगा कि वो जो आप मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं उसका क्या रूट है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं, मतलब वो एक्शन करने के पहले ही निकल गया, वो बॉडी से एक्सक्रीट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पास इफेक्ट का एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। The greater the first pass effect, the less the agent will reach to the systematic circulation when the agent is administered orally. Agent means the molecule component, right? Lidocaine anesthetic agent is a drug which with a first pass effect that is so great that oral administration is not practical. ठीक है? In the case of propranolol, a significant portion of the orally administered dose is metabolized. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें फर्स्ट पास इफेक्ट होता है जिन ड्रग्स में। तो ये आपके स्टडी के कंसिडरेशन में फार्माकोकाइनेटिक्स होना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फार्माकोकाइनेटिक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, बिकॉज you are designing some drug, and if you are not considering this pharmacokinetics and dynamics part, then um, maybe effect of drug is very less and maybe useless. Another administrative location is drug administration location is sublingual or buccal. So placement under the tongue allow the drug to diffuse into the capillary network and therefore to enter the systematic circulation directly. Right? Only small amount of drug are required to gain access to the blood. The sublingual route may be very satisfactory. For example, nitroglycerin in angina pectoris. Because the stomach is bypassed, acid liability and gut permeability is not important. नहीं, सबलिंगुअल में ये गट में नहीं जा रहा है, अपने स्टमक में नहीं जा रहा है, तो बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं एसिड का, और वो परमेबल है कि नहीं, गट परमेबल है कि नहीं, फर्स्ट पास इफेक्ट का, ये सब चीज इससे हम कम कर सकते हैं सबलिंगुअल में, राइट। एडवांटेजेस है सबलिंगुअल के, रैपिड एब्जॉर्प्शन, ड्रग स्टेबिलिटी, अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट, ड्रग्स प्रॉपर्टी नॉन पोलर एंड लिपिड सॉल्युबल जो है वो इसमें। डिसएडवांटेजेस है, इनकन्वीनियंट है, स्मॉल डोज है, अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ सम ड्रग्स। ठीक है, डोजेस आप इसमें बहुत ज्यादा सबलिंगुअल नहीं दे सकते हैं।
Another is rectal. So 50% of the drainage of rectal region bypasses the portal circulation. Thus, the biotransformation of drug by the liver is minimized. Okay. रेक्टल ड्रग्स में अगर कोई फर्स्ट पास इफेक्ट किसी में ज्यादा है या बायो ट्रांसफॉर्मेशन की चांसेस है, मेटाबॉलिज्म का चांसेस है, तो वो रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन से हम उसको वॉमिट कर सकते हैं। प्लस में कुछ अगर रेक्टम में कोई ड्रग्स की जरूरत है, कुछ अल्सर है, कुछ ऐसे, तो ऐसे ड्रग के लिए रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग यूज करते हैं। Benefits and devoid of destructions of the drug by intestinal enzyme or by low pH in the stomach. Unconscious patient and children इसके लिए है। If patient is nauseous or vomiting, then अगर कोई पेशेंट एलर्जिक है, वो ड्रग्स ले रहा है, स्टमक बार बार वॉमिट कर रहा है, ऐसे केस में कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शंस में वेरी, एब्जॉर्प्शन तो ऑब्वियसली थोड़े से कम होंगे क्योंकि चांसेस ऑफ आई मीन एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन कम मिल रहा है। अब इंटेस्टाइन में तो इतना लंबा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो काफी टाइम उन्हें मिल रहा है, बट यहाँ पे कम है। गुड फॉर ड्रग अफेक्टिंग द बॉल सच एज laxatives. Irritating drug contradicted can be used for both local effect and systematic. पर ज्यादातर जो रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोकल इफेक्ट के लिए ही है। नहीं, parenteral routes. So parenteral administration is used for drugs that are poorly absorbed from gastrointestinal tract and for agents such as insulin that are unstable in GI tract. ठीक है? Parenteral administration is also used for treatment of unconscious patient and under circumstances that require a rapid onset of actions. ठीक है? Intravascular, intramuscular, and subcutaneous. These are the three parenteral route mainly, right? This slide show you location of intramuscular, subcutaneous, and intravenous injections. So you can see here that intramuscular is in the muscles, in the deep into the muscles. ये outer part है हमारे स्किन का, ठीक है। इंट्रामस्कुलर यहाँ पे है। वेनस, इंट्रावेनस डायरेक्टली वेन में है। आप देखते होंगे डॉक्टर्स पहले वेन सर्च करते हैं, देन वेन में देते हैं। सबक्यूटेनियस जो है वो आपको डर्मिस के आसपास में सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज है वहां पे ये, ठीक है। इस इस तीन रूट्स में भी आप देखेंगे यहाँ पे कि वेनस जो है, इंट्रावेनस है, वो मोर इफेक्टिव होगा। इसलिए डायरेक्ट वेन में जा रहा है तो सप्लाई फास्ट होगा। तो इंट्रावेस्कुलर आईवी इंजेक्शन इज द मोस्ट कॉमन parenteral route for drugs that are not absorbed orally. There is often no other choices. Rapid onset of action because the drugs is injected directly into the bloodstream. Useful in emergencies and in patients that are unconscious. जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, जो ना सबलिंगुअल ले सकता है ना ओरल ना रेक्टल, तो वैसे केस में हम कर सकते हैं। The drugs avoid the GI tract and first pass metabolism by liver. Smaller dose generally are required than the other route, but cost is high. डोजेस कम है इंट्रावेस्कुलर में, बट कॉस्टिंग ज्यादा होगा क्योंकि जब कोई भी मॉलिक्यूल जब आप डायरेक्टली बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल, उसकी प्योरिटी वो काफी हाई रखनी होती है आप। और फिर इन सब में एक ड्रॉबैक ये है कि आपको ट्रेन मैन पावर इसमें चाहिए। ग्रेटर रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट, जो जितना फास्ट होगा उसमें रिस्क उतना ज्यादा होगा। अगर वो एलर्जिक रिस्पॉन्स करेगा तो एक साथ काफी सारा एलर्जिक रिस्पॉन्स करेगा। साइड इफेक्ट होगा तो एकदम से साइड इफेक्ट होगा। अगर आपने कोई ओरल एडमिनिस्ट्रेशन लिया है तो उसके चांसेस हैं आप वॉमिट करवा देंगे या और बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप उसको कर सकते हैं कंट्रोल। इसमें आपको बहुत कम चांस मिलेगा अगर आपने कोई गलत मेडिसिन दे दिया या आपका सूट नहीं किया बॉडी में, या अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, देन यू विल गेट ऑलमोस्ट नो नो टाइम, राइट।
So high concentration attained rapidly that are injected cannot be recalled by a strategy such as emesis or binding to activated charcoal. होता है ना जो ओरल ड्रग लेते हैं, आपने कभी किसी हॉस्पिटल में केसेस देखे होंगे जो पॉइजन या और कुछ ऐसे खा के आते हैं, तो उनको चारकोल एंड ऑल ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। वो क्या, चारकोल से पॉइजन से जो एलर्जिक ड्रग है वो बाइंड करके और वॉमिटिंग के थ्रू या स्टूल के थ्रू वो पास हो जाता है। इसमें कोई चांस नहीं इंट्रावेस्कुलर या इंट्रावेनस में, चारकोल तो आप डाल नहीं सकते ना वेन्स में। रिस्क ऑफ इमोबिलिज्म ना, ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स क्रिएट कर सकता है। नहीं, इमोबिलाइज हो गया कोई मॉलिक्यूल अगर आप है अंदर जाके, तो उसके चांसेस है। मे इंट्रोड्यूस बैक्टीरिया थ्रू कंटामिनेशन इंड्यूस हेमोलाइसिस। ठीक है। कई बार जो हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, अगर दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड एंड दे आर नॉट मेंटेनिंग हाइजीन, तो या जो इक्विपमेंट आप यूज करें इंजेक्शन एंड ऑल इज नॉट स्टेराइल, तो अगर वो स्टेराइल नहीं है तो इन्फेक्शन के भी चांसेस हैं। एड्स जैसे डिजीजेस भी पॉसिबिलिटीज है इन एडमिनिस्ट्रेशन रूट में। एंड पेन एट एप्लीकेशन साइट, पेन भी। एंड नो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटी, आप खुद से खुद को इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कुछ लोग लगा लेते हैं बट इट इज नॉट रिकमेंडेड एंड नॉट पॉसिबल। ओके। So capillary bring the blood into intimate relationship with the tissue cell, artery, arterioles, capillary, venules, veins. These are the uh, steps. Intra-artery, as we understand, कि artery में डायरेक्ट हम लोग करते हैं। So diagnosis, diagnostic purpose and for chemotherapy. ठीक है। Similar properties, advantage and disadvantage of intravascular. Intra-artery route is especially used when high drug concentration is a specific tissue is required. डायरेक्ट आप आर्टरी में देते हैं। इंट्रामस्कुलर कीमोथेरेपी, वी ऑल अंडरस्टैंड कीमोथेरेपी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड इंट्रामस्कुलर कैन बी aqueous solution and a specialized depot preparation, often a suspension of drug in a non-aqueous vehicle such as ethylene glycol, etc. So this is the property of intramuscular part. Absorption of drug in aqueous solution is fast, whereas that from depot preparation is slow. Drug passes through capillary walls and enter the bloodstream. Pain at injection site for certain drugs. This parenteral route may be used when an immediate effect is not required, but a prompt effect is desirable. अगर हमें बहुत इमीडिएट इफेक्ट नहीं चाहिए, लेकिन हमें प्रॉम्प्ट इफेक्ट चाहिए, इमीडिएट नहीं, थोड़ी देर बाद चलेगा लेकिन असर होना चाहिए, तो वैसे में हम इंट्रामस्कुलर यूज करते हैं। इसमें फिर भी रिस्क थोड़े से कम है और कंपेरेटिवली लेस ट्रेन मैन पावर की जरूरत है ना। वेन्स ढूंढना या आर्टरी ढूंढना वो थोड़ा टफ है और उसमें स्किल मैन पावर चाहिए, इसमें थोड़ा कम ट्रेन मैन पावर भी चलेगा। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एन इंट्रामस्कुलर डिपोट इज मोर predictable and uniform than from subcutaneous site, right? Subcutaneous drug is injected beneath the skin and permeates capillary wall to enter bloodstream. Absorption from the site of injection is dependent on local blood flow. Okay. Subcutaneous drug given by route or insulin subcutaneous में sodium, heparin, etc. can be administered through subcutaneous. More or less, subcutaneous administration is sub I mean intravascular kind of things effect is there, right? Inhalation provide the rapid delivery of drug across the large surface area of mucous membrane of respiratory tract. लंग्स से रिलेटेड कोई अगर डिजीज है, सपोज इन्फेक्शन है कोई लंग से रिलेटेड, तो वैसे केस में इनहेलेशन इज द बेस्ट वन, राइट? This route of administration is used for drugs that are gaseous and volatile agent. For example, some anesthetic are those that can be dissipated in aerosol.
The route is particularly effective and convenient for patients with respiratory complaint, for example asthma, chronic obstruction pulmonary, etc. कोविड में भी हम लोगों ने काफी इनहेलेशन की. Topical application is used when the local effect of drug is desired, used for most dermatologists and ophthalmology. नहीं, स्किन पे आपको अगर लोकल कोई इम्प्लीमेंटेशन करना है तो हम उसको यूज करते हैं. So clotrimazole is applied as a cream to the skin in the treatment of dermatophytosis. Atropine is instilled directly into the eye to dilate and the pupils. ज्यादातर आप देखेंगे ऑप्थेल्मिक यूज के जो मेडिसिन है वो आंख के थ्रू ही आपको डायरेक्ट आंख में ही डालते हैं, आईज में ही डालते हैं. बिकॉज जो अपर पार्ट है आईज का उसमें वो ज्यादा इफेक्टिव है. ठीक है. आईज के कुछ पार्ट हैं जिसमें वेन्स नहीं है, नसेज नहीं है, तो वैसे जगह आप ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकता. कोई भी ओरल ड्रग ले रहे हैं, इंट्रावेनस ले रहे हैं, उसके लिए तो आपको वेन से नस होना चाहिए ना. जिस पार्ट पे नहीं है वहां तो आपको ज्यादा इफेक्ट होगा कि आप डायरेक्ट वहां पे इम्प्लीमेंट करें. ठीक है. इंट्राथेकल और इंट्रावेंट्रिकुलर, it's sometimes necessary to introduce drug directly into the cerebrospinal fluid CSF. some anesthetics, right? कुछ ड्रग्स हैं जो कि हम डायरेक्ट सीएसएफ में करते हैं. सीएसएफ बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम के अराउंड एक फ्लूइड होता है, तो उसमें हम डायरेक्ट यूज करते हैं. ट्रांसडर्मल, तो ट्रांसडर्मल दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अचीव सिस्टमैटिक इफेक्ट, systematic effects by application of drug to the skin, usually via a transdermal patches. The rate of absorption can vary markedly depending upon the physical characteristic of the skin. Small lipid soluble molecules are usually applicable. This route is most often used for sustained delivery. Okay? अगर आपको धीरे धीरे कोई डिलीवरी ड्रग के करने हैं स्लोली, तो आप इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन यूज कर सकते हैं. तो this is all about the pharmacokinetics. Next, we will start with the pharmacodynamics. Okay, just take a 2 minute break and then we'll resume pharmacodynamics part.
Okay, so pharmacodynamics. Pharmacodynamics is the study of biochemical and physiological effect of drug and their mechanism of action. Simply stated, pharmacodynamics refers to the effect of a drug on the body. फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग बेसिकली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे मूव कर रहा है क्रॉस आवर बॉडी सिस्टम और क्या क्या पैरामीटर्स है जो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट्स को, मेटाबॉलिज्म को और एक्शन को डिफाइन कर सकता है। और इसमें हम लोग इसके इफेक्ट को देखते हैं, बेसिकली हाउ इफेक्टिव इज द इवन नॉट ओनली द physiological effect, other effect like biochemical or psychological, everything is studied in the pharmacodynamics. किसी भी तरह से आपके ड्रग मॉलिक्यूल बॉडी पे जो इफेक्ट है वो हम फार्माकोडायनामिक्स में स्टडी। सो ऑब्वियसली इफेक्ट ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन द रिसेप्टर्स। नहीं, रिसेप्टर्स कोई भी, जैसे हमारी आवाज है, नहीं हमारी वॉइस है, तो अब वॉइस के जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या है, ईयर्स हैं। अगर हम ईयर्स को बंद कर लें तो कोई इफेक्ट नहीं है। सो सिमिलरली मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करते हैं मॉलिक्यूल्स के डायनामिक्स में, राइट। रिसेप्टर में एग्जिस्ट इन टू इंटरचेंजेबल स्टेट, एक्टिव स्टेट एंड इनएक्टिव स्टेट। बाइंडिंग ऑफ ड्रग शिफ्ट दिस इक्विलिब्रियम इन आइदर डायरेक्शंस। तो भी एक्सटर्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो रिसेप्टर्स के जो स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, वो शिफ्ट होगा, आइदर वो एक्टिव स्टेट में जाएगा या इनएक्टिव स्टेट में। Ligands, we already studied many times. Ligands, any molecule this attaches selectively to the particular receptors. Affinity, these are the few terminologies. So the strength of the reversible interactions between a drug and its receptor as measured by the dissociation constant is defined as the affinity of one for others. किसी भी मॉलिक्यूल का एक एक के लिए दूसरे से जो अफिनिटी मतलब अफिनिटी है उसको हम मेजर करते हैं। Intrinsic activity, capacity to induce a functional changes in the receptor, means कोई फंक्शनल चेंजेस अगर रिसेप्टर में नहीं आ रहा है मॉलिक्यूल के बाइंड होने से, दिस इज नॉट इंट्रिंसिक एक्टिविटी। Specificity, a drug that interact with a single type of receptor that is expressed on only a limited number of differentiated cell will exhibit high specificity. स्पेसिफिक है, सेल के लिए स्पेसिफिक है, रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक है, तो वो उसको हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। अब दिस इज नीड ऑफ आई मीन ड्रग मॉलिक्यूल्स कि क्या नीड है थेरेपेटिक्स का। अगर समटाइम हमें बहुत स्पेसिफिक ड्रग चाहिए होता है एंड समटाइम हमें जनरलाइज चाहिए होता है, सो वो नीड पे डिपेंड करता है। ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो जितना स्पेसिफिक होगा वो उतना अच्छा ड्रग होगा, उसके साइड इफेक्ट उतना कम होगा। सो स्पेसिफिसिटी इज वन ऑफ द मेजर पैरामीटर फॉर ड्रग डिस्कवरी इन फार्माकोडायनामिक्स पार्ट, राइट। Agonists, so drug that bind to physiological receptor and mimic the regulatory effect of the endogenous signaling compound are termed as agonists. The drug bind to the same recognition site of the endogenous agonist, the primary or orthosteric site on the receptor. The drug is said to be primary agonist. Allosteric agonists bind to a different region on receptor referred to as an allosteric site. दिस इज नथिंग न्यू, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं 10th 12th से ही। सो दिस इज नथिंग न्यू। एंटागोनिस्टिक ड्रग दैट ब्लॉक और रिड्यूस द एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट आर टर्म्ड एज एंटागोनिस्ट। मींस एगोनिस्ट के अगेंस्ट जो मॉलिक्यूल्स वर्क करता है दैट इज एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिज्म मोस्ट कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम competition with an agonist for the same overlapping site on receptors, and these are the different type of antagonist: physical antagonist, chemical antagonist, physiological antagonist, and pharmacological antagonist, right? Bind to the
So physical antagonists bind to the drug and prevent its absorption, like charcoal bind to alkaloid and prevents their absorption. Chemical antagonists combine with substance chemically, like chelating agent bind with the metals. Physiological antagonists produce an action opposite to the substance but by binding to the different receptors. Okay. Pharmacological antagonists produce no effect, so no intrinsic activities. Partial agonist agents that are only partially as effect as agonist regardless of the concentration employed. Inverse agonist, so these are the past of antagonist and agonist. Okay, I will share this PPT to you so that you can read it out. Efficacy. A maximal effect an agonist can produce is basically the efficacy. It can be measured with a graded dose response curve only. Potency, the amount of the drug needed to the produce a given effect. Potency is determined by affinity of the receptor for the drug. The dose causing 50% from the maximal effect, EC50, can be obtained from graded dose response curve. Quantum dose response curve, PD50, TD50, and LD50 are potency variable. Okay. Repeated administration of a drug resulted diminished effect or tolerance. Okay, these are the example of this tolerance. This may be due to masking of the receptors, loss of the receptor, exhaustion of the mediators. Competitive and non-competitive. So antagonists bind with the same receptor as the agonist bind to the, and non-competitive bind to the another site of receptor. Antagonist resemble chemically with the agonist and non-competitive does not resemble. Examples are atropine and ACH, diazepam and biculin. These are the difference between competitive and non-competitive agonist and physiological receptors are GPCR, ion channels, transmembrane enzyme, transmembrane non-enzyme, nuclear receptor, intracellular enzymes, right? Cellular pathway activated by physiological receptors, single transduction pathway. Physiological receptor have at least two major function, ligand binding and मैसेज प्रोपगेशन. तो भी रिसेप्टर के दो रोल हो सकते हैं. रिसेप्टर वही है जो कि रिसीव कर रहा है कोई भी सिग्नल को, या किसी भी, अगर हम लोग ड्रग के केस में देखें तो लिगेंड्स को या ड्रग मॉलिक्यूल, और फिर उस ड्रग का जो इफेक्ट है उस मैसेज को प्रोपगेट कर रहा है, मीन्स उसको पास कर रहा है इफेक्ट. अगर किसी ने रिसीव किया और पास नहीं किया तो उसका कोई मीनिंग नहीं है. तो सिग्नल ट्रांसडक्शन का है कि रिसीव है, पास. The regulatory action of receptor may be exerted directly on the cellular target on effector protein or may be conveyed by intermediary cellular signaling molecule called transducers. Therapeutic window. This is again one of the important things. Therapeutic window. Therapeutic effect is seen only with a narrow range of plasma concentrations. ये क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई ड्रग है उसका इफेक्ट अगर आप उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ाते चले जाओ, डोज बढ़ाते चले जाओ तो ज्यादा हो, या अगर उसके डोज को हम कम कर दें तो ज्यादा हुआ है. एक फिक्स कंसेंट्रेशन है जो आपके प्लाज्मा में अगर है, उस कंसेंट्रेशन पे अवेलेबिलिटी है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का आपकी प्लाज्मा में, तो ये देखा गया है कि उसकी इफेक्टिवनेस हाई है, सबसे ज्यादा है. तो इस थेरेपेटिक विंडो को लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं और फिक्स करते हैं रिलीज को, जो ड्रग रिलीज है लिगेंड मेटाबॉलिज्म को, इसको फिक्स करते हैं कि ये मॉलिक्यूल इस तरह से रिलीज हो सो दैट इसके थेरेपेटिक विंडो इतना मेंटेन हो, इसका कंसंट्रेशन इफेक्टिवनेस को कंट्रोल करने के लिए या बेस्ट रिजल्ट के लिए.
बोथ above and below this range beneficial effect is suboptimal. ठीक है. Drug having low therapeutic window, थियोपाइलिन, कार्बामेपाजोल, डाइगोक्सिन, लिथियम एक्सेट्रा. देखिए ये थेरेपेटिक विंडो. लो थेरेपेटिक विंडो का मतलब क्या हुआ? उसका रेंज बहुत कम है. नहीं, उसकी कंसंट्रेशन मान लो कि बिल्कुल 1.2 पॉइंट के रेंज पे है कि उतना बिल्कुल आना चाहिए. किसी का कि ब्रॉड रेंज है. नहीं, कंसंट्रेशन का ब्रॉड रेंज है कि नहीं, वो 5 7 10 के रेंज में जा रहा है. वो इजी होता है, जो ड्रग डिजाइनिंग कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं कंपनी, उसके लिए इजी होता है. थेरेपेटिक इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, द रेशियो ऑफ LD50 एंड AD50 represent an estimate of the safety of the drug. थेरेपेटिक इंडेक्स, थेरेपेटिक विंडो अलग था, थेरेपेटिक इंडेक्स अलग है. Okay? Importance of graded dose response curve. So calculation of the AD50, the dose that produce 50% of the maximum response in 1 NL. ठीक है. Comparing AD50 of different drug on the same animal give an idea about if effectiveness of the dose that produce the same effect. ठीक है. Comparing ED50 of the same drug in the different patient give an idea about the relative sensitivity of patient to the same drug, that is degree of biological variation inherent in a population. Calculation of the maximum response. Comparing the maximum response obtained by different drug on the same organ gives an idea about the intrinsic activity. Determination of the steepness of the dose response. Any small change in drug concentration produce significant increase in the tissue response. This means that maximum response of the drug could be reached very fast and the toxicity could be reached very fast too. ठीक है. तो सेम है, जिसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, जितना फास्ट होगा, उसकी टॉक्सिसिटी के भी चांसेस उतना ज्यादा होंगे. Another is synergism. Synergism is means when the action of one drug is facilitated or increased by the other, they are said to be synergistic. In a synergistic pair, both the drug can have action in the same direction or given alone. One may be inactive but still enhance the action of other when given together. इसमें क्या है, दो इफेक्ट हो सकते हैं. एक तो क्या है कि दो मॉलिक्यूल अगर साथ में है तो बेटर रिजल्ट दे रहा है, इनहेंस रिजल्ट दे रहा है. दूसरा ये है कि दो मॉलिक्यूल अगर साथ में है तभी रिजल्ट दे रहा है. दोनों अलग अलग बात है. ठीक है. एक है कि अगर वो साथ में, इफ दिस मॉलिक्यूल आर टुगेदर देन बेटर रिजल्ट. और एक है कि ओनली बेटर रिजल्ट इज अचीव व्हेन दिस मॉलिक्यूल्स आर टुगेदर, अदरवाइज नहीं. ठीक है. एडिटिव्स. The effect of the two drug is in the same direction and simply add up. ठीक है. इसको एडिटिव बोलते हैं. जैसे एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल, दोनों का सेम फंक्शन, दोनों और किसी को बहुत हाई फीवर है और अगर सिर्फ पैरासीटामोल से काम नहीं चल रहा है तो एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल. ठीक है. सुपर एडिटिव. The effect of combination is greater than the individual effect. This is called super additives. ठीक है. इसके भी एग्जांपल्स हैं डिफरेंट. स्टाइल पोलिन एंड आइसोस्टिजिमाइन. Antagonism, competitive antagonism is same binding site as the as of the agonist, resemble chemically with agonist. This is antagonism. Non-competitive competitive antagonist, different binding site as a agonist, not resemble chemically with agonist. ठीक है. बॉडी साइज. ड्रग इफेक्टिवनेस जो है बॉडी साइज पे डिपेंड करता है. अगर कभी आप पेडियाट्रिक के पास विजिट किए हैं, बच्चों के जो डॉक्टर हैं, तो वो ज्यादातर बॉडी वेट से ही दवा डोजेस बताते हैं, पूछते हैं कितना केजी वेट है और उसके बाद वो डोज देते हैं. इवन एडल्ट्स में भी डोजेस बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है. किसी का 40 केजी वेट है और किसी का 120 किलो वेट है, 120 केजी,
तो दोनों में इफेक्ट सेम नहीं होगा ना पैरासीटामोल का, उसके लिए अलग होना चाहिए, या अगर कोई और दवा ले रहा है तो डोजेस उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। इवन not only the body size, even based on gender and all, many parameters are for deciding the doses. ठीक है, individual dose is body weight and average adult dose by 70. ठीक, 70. The dose of drug for children is often calculated from adult dose. जो adult का डोज है उसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगा के, जिसमें बॉडी वेट एंड ऑल। So that's all for pharmacokinetics part and pharmacodynamics. And today is the fundamental class for pharmacokinetics and pharmacodynamics. In next class, whenever we will meet, we will, practice on some software. We will check how to predict these parameters. जो ये हमने parameters decide की आज study की, उनके बारे में हम और डिटेल में, मीन्स प्रेडिक्शन जो हमारा कंप्यूटेशनल टूल्स एंड ऑल है, या और जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो भी इस पे क्लास होगा उसमें। मैं ये पीपीटी अभी राधा किशन जी को भेज रहा हूँ, तो ही विल शेयर विथ यू ऑल, सो दैट जब हम प्रेडिक्शन पार्ट स्टडी करेंगे तो आपको थोड़ा इन टर्मिनोलॉजी से बेनिफिट मिले। ठीक है। यस सर। और अभी आई अंडरस्टैंड कि चूंकि ये डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इसमें से टर्म्स हम लोग नहीं यूज करते हैं, एंड कुछ कंफ्यूजिंग भी था। एगोनिस्ट की अगर बात करें, एंटागोनिस्ट की बात करें, कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव की बात करें, so these are very confusing. I understand this. So that's why I shared this PPT immediately to you so that you can read it out. Radha Kishan ji, I shared this PPT to you so that you share with the participant. And this is just fundamental to pharmacokinetics and dynamics. नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इस पे जो सॉफ्टवेयर एंड टूल बेस्ड स्टडी है उसको करेंगे। और अभी आप 10 मिनट्स के लिए एडमिट प्रॉपर्टी, जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स से रिलेटेड है, इस आज के लेक्चर से, वो स्विस एडम सर्वर से आप प्रेडिक्ट करेंगे। तो थोड़ा उस इसमें से जो कुछ टर्म्स हैं वो आपको वहां पे मिलेंगे, तो आप कोरिलेट कर पाएंगे आज के लेक्चर को वहां से। मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ स्विस एडम, ये कई लोग आप में से जानते होंगे। ठीक है, आप इसको अभी थोड़ा देखिए 10 मिनट, और उसके बाद फिर हम सेशन क्लोज। ठीक है, सो 10 मिनट्स। या और भी कोई भी एडमिट प्रॉपर्टी प्रेडिक्शन टूल्स आप देख सकते हैं, बट इस स्विस एडम एक मैंने एग्जांपल की उस पर दिया है।